Morning to all my respected faculties and my dear friends. My name is Akansha Taliwal and I'm working as an assistant professor in Electronics and Communication Department in PIET in Parul University. Today I'm here to give you a webinar on the topic embedded system, a boon to our life. And for that I'm inviting a guest speaker, Mr. Ravi Sharma. He is a senior educator and senior founder of SR Automations and Robotics. He has a great knowledge in automations and robotics field. So, without wasting any more time, I'll hand over my presentation to Mr. Ravi sir. Ravi sir, you can continue. Good morning, everyone. So, myself, Ravi Sharma, and as Akanksha ma'am has introduced me, I'm co-founder and a senior educator at SR Automation and Robotics. So, what is embedded systems, if you know? So, embedded system is such a thing which has been changing our life since it has been invented or it has been designed for the purpose we need to solve. So, embedded systems, it is a sort of boon, or we can say a grace to our life, which is changing the way we are thinking, we are working, we are living. So, first of all, let me tell you what embedded system actually is, or how we can define it. So, it is like a sort of computer hardware, I can say, or embedded with a software, and it can be one of the component of it. There are multiple definitions how you can define it. So, like whenever you are using any electronic device, it is having some sort of embedded system enabled with it. It can be a combination of multiple things. It can be a combination of a hardware or software. It can be a combination with some electronic device with a mechanical device, or anything like that, which you can combine and make your work done. So embedded system is actually a part of a larger system. So when you say that any electronic device which is functioning as a single unit, so embedded system is a thing which is a part, or I can say it is going like it is helping the work to do. So whenever if you are driving a car, so normally previous cars were having drum brakes or disc brakes only, but now a new system of anti-locking brake system has been designed for that. So what ABS does is they constantly keep the data of the speed and the pressure of the brake they want to apply, and slowly and gradually they apply the brakes, which prevents the vehicle from slipping or any major accidents. Now, what is the significance? Significance means how it has been invaded in the human life. What are the applications where we have been using embedded systems knowingly or unknowingly? So, main features, what I can say, they are very compact in size. The size is very small. We can say, like previously, when there were mobile phones in the time of 1990s, 1995s, if you have seen, and the current mobile phones, what we have seen. So there has been a vast difference into the size of it, the features, the performance. So everything has changed gradually. So embedded systems has given a size ratio where you can reduce the size of your device, you can reduce the cost of your device. The design which you want to do, it can be much more simplified. So it is very popular in the electronic section or any automation section, we can say, and it is inevitable from human life. You can't take it out and you can say that I won't be using embedded systems anymore now. So no, you can't do that. So ranging from a kitchenware to a spacecraft, there has been embedded systems everywhere. If you visit a hospital, you can see here, you have seen an X-ray machine. Yes, it is a part of embedded system. You have seen MRI machine. Yes, it is a part of embedded system. You have a washing machine at your home. Yes, it is a part of embedded system. You can see a Mars rover. So it has been developed with the help of embedded system only. So from washing clothes to reaching Mars, I can say embedded system has given a vast role in our life. So did they existed earlier as well, like before having a touchscreen mobile or before having those feature phones? Was there embedded system as well? So it has been from a very long time. What we know that whenever the first computer was built, yes, it was having embedded system, but it was not that much popular or it was not that much accessible to people. So like it was designed around something.
It was having large sizes. It was costly. It was not accessible to everyone. Like if at that time, if I want to develop any system, it was difficult for me to develop and get those features or resources that I need for the development. Previously, all the embedded system was developed upon a microprocessor. And currently, what has been changed, it is built around a microcontroller. So, what is the major difference between a processor and a controller? So, processor doesn't possess any sort of memory or any sort of ports or any specific hardware acceleration, I can say. So when if I give you an example of Intel, so if you use an Intel processor, you won't get any memory attached with it. You won't get any graphical memory. You don't get any storage or flash memory with it. So what you need is you need additional motherboard where you can mount your processor and you can use your uh, you can mount your RAM. You can attach your hard disk. You can attach your graphical units and any such application like if you want to attach a display so you can attach it so any other input output peripherals or additional components if you want so you need to attach it to the microprocessor whereas in microcontroller you get a memory inbuilt you get ports inbuilt if you want a DAC converter or ADC converter which I will tell you further so these things you get to embedded in it you don't need to purchase or you don't need to add those things additionally afterwards so microcontroller makes a system less complex, more compact, and easier to assemble or disassemble or easier to program it out. Like when I say about a microcontroller, so microcontroller is not a thing which can be used for high-end applications. So if you want to run a laptop where you have to perform multiple tasks at the same time, so you won't be able to do that by using a microcontroller. What is the reason? The microcontroller is having some speed limitation, some process limitation. So when you want to perform small tasks, like if you want to make a calculator, so you can do that from a microcontroller. You don't need a processor for that. But if you want to develop a mobile device, you need a processor for that because the thing is you need more and more efficiency, you need better features, you have to make it more complex to perform multiple operations at the same time. Now, as I told, why a microcontroller? So it is a single chip. When in a processor, I say you need a motherboard to attach any additional peripherals you want. Even if you want to attach a single port where you can, or I can say a USB port where you can plug in or plug out any device of yours. So you need to attach an input or output port upon it. Whereas in microcontroller, you get inbuilt ports. So you just attach a single USB pin and you can attach your device and run it. So you can say a microcontroller is a single chip computer. It doesn't have much complex or much large systems. It is just a single chip which can perform every assigned task on it. So in the microcontroller, you get arithmetic and logic unit. So what is the purpose of it? So arithmetic and logic unit lets you perform the mathematical operations if you want to do that. Like if you want to develop a calculator or you want to do an operation of 2 plus 2 is equal to 4. So you need an arithmetic and logical unit. So you might have studied those things in a basic block diagram of a computer. So there is an ALU in it. So this is the thing which is embedded into a microcontroller. Second is the memory for storing programs. Microcontroller is just a hardware as I told. So you need some additional software or additional program through which you can do the assigned task or which the controller can perform the assigned task. So for that you need a memory. So you get an onboard flash or RAM upon it. So from that you can store the programs which you have developed. It is having an EEPROM. So electronically erasable and programmable ROM. So it is for non-volatile data storage. Suppose if you have a power cut and the controller goes into a shutdown mode, what would happen? Your data would be lost, but no. In controller, you have got an EEPROM storage where you can store your data permanently and you can erase it if you want and rewrite if you want. You get an onboard RAM. So what does the RAM does? So if I say in a laptop, it is used for multitasking. So it provides you a space where you can store your running programs and you can easily access them in a faster manner. So
So slower the RAM, lower the process, higher the RAM, more the processes. So इसके अंदर आपको स्पेशल फंक्शन के लिए बहुत सारे रजिस्टर्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 128 बिट के रजिस्टर्स आते हैं, 256 बिट्स के रजिस्टर आते हैं, 512 बिट्स आते हैं. सो जितने ज्यादा बिट्स के आप रजिस्टर्स उसके अंदर यूज करते हो, उतनी ही ज्यादा आपको स्टोरेज स्पेस उसके अंदर मिलती है, जहाँ पर आपके जो रैंडम वेरिएबल्स जो वो प्रोग्राम जनरेट कर रहा है, और आई कैन से जो आउटपुट वो जनरेट कर रहा है, उसको आप वहाँ पर इजीली आप वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं. उसी के साथ में आपको वहाँ पे मिलते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए पोर्ट्स. सो प्रोसेसर के अंदर आपको एडिशनली यूएसबी है. फिर आपको डिस्प्ले अगर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए आपको HDMI या फिर सीरियल पोर्ट्स उसके ऊपर अटैच करने रहते हैं. अगर ब्लूटूथ मुझे लगाना है तो उसके लिए ब्लूटूथ और प्रोसेसर के बीच में एडिशनल एक डिवाइस लगाना पड़ता है जो वो पूरे कम्युनिकेशन इंटरफेस को कंट्रोल कर सके. जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपको उतने पोर्ट्स, SPI आता है, I2C आता है, SSI आता है, एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन आता है. सो इस तरह की चीज़ों के थ्रू आप इजीली ब्लूटूथ, वाईफाई, फिर जिगबी, ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो रहते हैं, GSM आ गया, GPS मॉड्यूल्स आ गए, सो उनको डायरेक्टली 2 पिन 3 पिन कनेक्शन के थ्रू आप उनको इजीली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. देन यू गेट टाइमर्स एंड काउंटर्स. What is the function of a timer and a counter? So as the name suggests, timer means something which is associated with time. So you can easily track your time. You can set time range for your functions to execute. आज अगर मुझे कोई भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, समझिए I want to blink an LED for 1 second on and 1 second off. So there is a time frame of 1 second. So who controls that? So that is the timer which is embedded in the microcontroller. And if I want to do it the same thing with a microprocessor, I need additional unit for the timer and counters. What does a counter does? So counters, they actually count how many steps or how many functions you are doing. If I want to attach a button and count how many times I have pressed the button, so you need a counter which would be counting the signals that has been sent by the button to the controller. Analog to digital converters. What is the function of ADC or a reversal of it at DAC? So ADC does analog values को digital में convert करता है. Now how are analog values? So it is a value which is ranging from 0 to some unit. If I say if you have seen a sine wave, so it is an analog value. And if you have seen a square wave, it is a digital value. So how you can differentiate those things? So साइन वेव के अंदर क्या रहता है कि मेरा अगर समझिए 50 हर्ट्ज का अगर मेरा साइन वेव है, so it is rising from 0 hertz to 50 hertz gradually, then again falling back from 50 hertz to 0 hertz, then going in minus from 0 to minus 50. So इस तरह की जो साइकिल चलती हैं in which there is a gradual increment or decrement, वो सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल्स की तरह क्लासिफाई करते हैं. सेकेंड इज अ डिजिटल. So digital signals के अंदर क्या रहता है? If I say I am having an amplitude of 0 hertz to 50 hertz, so it won't take any gap in between it. साइन वेव के अंदर एक कर्व जनरेट होता है, जबकि डिजिटल अगर कोई भी सिग्नल होता है जिसमें स्क्वायर वेव आ गया, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका. सो स्क्वायर वेव में क्या रहता है, आपका 0 से लेकर डायरेक्ट वो 1 तक का राइज देता है. 1 पे अगर आपको किसी टाइम फ्रेम के लिए उसको कंटिन्यूसली रन करवाना है, तो 1 के बाद वो सीधा 0 का डाउनफॉल देता है. सो वो जो रहता है वो डिजिटल सिग्नल आपका क्रिएट होता है. सो आपको कंट्रोलर के अंदर एक फैसिलिटी मिलती है जहां पर आप अपने किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसको कुछ वैल्यूज असाइन करवा के, जिसको आप स्टेप सिग्नल भी बता सकते हैं. इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, यू वुड बी नोइंग अबाउट हार्मोनिक्स. सो हार्मोनिक्स के अंदर इसी तरह के स्टेप्स आते हैं जिनको रिडक्शन करना रहता है. सो एडीसी जो काम करता है वो उसी तरह से उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स क्रिएट करता है विच सीम्स एज अ डिजिटल सिग्नल टू द कंट्रोलर, जिसमें जैसे बाइनरी की वैल्यूज रहती है 001 110, सो उस तरह को वो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है. और सेम अगर मैं बात करूँ डिजिटल टू एनालॉग के लिए, तो उसके अंदर पूरा रिवर्स काम रहता है कि वहां पर डिजिटल सिग्नल्स को वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है. अभी अगर डिजिटल सिग्नल्स है, सो ह्यूमन कांट रीड देम और अंडरस्टैंड देम इजीली, बट यस अ कंट्रोलर कैन डू दैट वेरी फास्ट. सो एनालॉग सिग्नल्स को वो जितना फास्ट प्रोसेस करता है, उससे ज्यादा फास्ट स्पीड पे वो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होता है. सो इसीलिए उसके साथ में एडीसी या डीएसी के यूनिट्स प्रोवाइडेड रहते हैं. नेक्स्ट इज द सर्किट फॉर रीसेट. सो व्हेनेवर योर कंट्रोलर इज परफॉर्मिंग सम टास्क व्हिच इज नॉट असाइंड, और या फिर किसी एरर की वजह से वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, सो यू कैन रीसेट इट इजीली. सिंपल एक बटन रहता है, यू प्रेस दैट स्विच, और आपका पूरा जो प्रोग्राम जो रनिंग था, इट विल ऑटोमेटिकली रीसेट. आई कैन से इट इज लाइक अ रीस्टार्टिंग अ लैपटॉप.
So whenever you have PC or laptop which is behaving something weird, you just what is the suggestion of an IT person for that? You just restart it. So your problem will be solved. So it is doing nothing. It is just resetting your processor or the controller or the peripherals which are attached. सो अगर कुछ भी उसके अंदर एरर आ रही है किसी ऑपरेशन की वजह से या किसी प्रोग्राम में बग की वजह से, सो वो इजीली उसको रिमूव कर पाता है। फिर रहता है पावर अप सीरियल प्रोग्रामिंग डीबगिंग। सो पावर अप के लिए उसके पास पावर पोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, सो आपको एडिशनली उसके लिए पावर कंट्रोलर, फिर सर्च प्रोटेक्टर्स, सो इस तरह की चीजें आपको उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंट्रोलर के अंदर आपको सिंपली फंक्शंस पूरे अवेलेबल रहते हैं। फिर आता है सीरियल प्रोग्रामिंग। सो अभी कंट्रोलर को अगर आपको ऑपरेट करना है, सो व्हाट यू नीड टू गिव इट सम इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू वो काम करेगा जैसा आप उसको बताओगे। सो सीरियल प्रोग्रामिंग क्या करता है, आपके जो सीरियल पिन्स रहती हैं कंट्रोलर के ऊपर, सीरियल पिन्स के अंदर RX और TX यानी कि रिसीवर पिन और ट्रांसमीटर पिन, सो इसका कॉम्बिनेशन एक यूज होता है। उसी के साथ में अगर आपको प्रोग्रामर कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस यूज कर रहा है, समझिए वो I2C के थ्रू उसको प्रोग्राम कर रहा है या JTAG के थ्रू उसको प्रोग्राम कर रहा है या SPI के थ्रू उसको प्रोग्राम कर रहा है, सो वो कम्युनिकेशन इंटरफेस को उसके साथ में अटैच करना रहता है। सो सिंपली आपको जो भी आपको टास्क उससे परफॉर्म करवाना है, यू कैन इजीली टेल इट वाया प्रोग्राम लैंग्वेज, और वो उसको डीबग करके अपने लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके उसको यूज करता है। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड अ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। सो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या काम करेगा, आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो आपके समझ में आ रहा है, हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर वो चीज को नहीं समझ पाता है। आज अगर मैं मेरे कीबोर्ड से ए एंटर करता हूँ स्क्रीन के अंदर, सो मेरे लिए मैंने वो ए प्रेस किया, बट उसके लिए वो एक कोडेड लैंग्वेज होगी, इधर इट कुड बी अ हेक्स कोड, इट कुड बी अ बाइनरी कोड और एनीथिंग। सो वो जो लैंग्वेजेस होती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसीलिए इस तरह का इंटरफेस क्रिएट किया जाता है जो पहले ह्यूमन अंडरस्टैंड करके वो लैंग्वेज में लिख सके जो उसे समझ में आती है। देन एक प्रोग्रामिंग यूनिट के थ्रू उसको कंट्रोलर को दिया जाता है। प्रोग्रामिंग यूनिट क्या काम करेगा कि वो जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो मशीन लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है जो उसको समझ में आ रही है, इट कुड बी एन असेंबली लैंग्वेज, इट कुड बी अ बाइनरी कोड। सो वो जो भी कंट्रोलर जो वो कोड को एक्सेप्ट करता होगा उस लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करके दिया जाता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट रहता है, सो वो पूरा कंट्रोलर के ऊपर उसका कंट्रोल रहता है कि मुझे कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करवाना है, और अगर वो प्रोग्राम के अंदर कुछ टाइमिंग है सो उसको किस तरह से मुझे कंट्रोल करना है। देन कम्स द सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो कंट्रोलर के अंदर आपको जो कम्युनिकेशन उसके साथ में करवाना हो एक्सटर्नल डिवाइसेस का, ह्यूमंस का नहीं, एक्सटर्नल डिवाइसेस का, जिसमें समझिए आपका ब्लूटूथ डिवाइस आ गया, आपके वाईफाई हो गया, जिगबी हो गया, फिर रडार का सिग्नल्स आते हैं, फिर लीडार आता है। सो इस तरह के जो आपके RF सिग्नल्स आते हैं, सो वो जो कम्युनिकेशन जो उनका करवाना रहता है, समझिए आप वायरलेस किसी भी तरह का आप उसके थ्रू कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, सो वो कम्युनिकेशन जो रहता है वो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। अब एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कोई भी एम्बेडेड सिस्टम आज अगर काम कर रहा है सो इट मस्ट बी हैविंग सम आर्किटेक्चर, इट मस्ट बी हैविंग सम हायरार्की जिसके थ्रू वो पूरे फ्लो को वो कंट्रोल कर रहा है, उसको वो यूज कर पा रहा है। सो हर एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर एक कस्टम बिल्ट हार्डवेयर अवेलेबल रहता है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होता है। सबसे कोर जो स्टेप होता है, सबसे मेन स्टेप होता है उसका, वो होता है CPU, इधर उसका प्रोसेसिंग यूनिट। सो उसके अंदर आपको मेमोरी चिप्स भी मिल जाती हैं, आप CPU के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो वहीं से उसमें लोड किया जाता है, जो मेमोरी चिप के अंदर जो सॉफ्टवेयर रहता है वो भी वहीं से लोड होता है। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU जो रहता है किसी भी सिस्टम का, वो क्या काम करता है कि पूरा आपका जो कंट्रोल है कंट्रोलर के ऊपर या जो डिवाइस का परफॉर्मेंस है, सो वो उसका कंट्रोल पूरा उसी के पास रहता है। सेकेंड लेयर आता है हार्डवेयर का। सो हार्डवेयर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स हुए, आपके पास इनपुट पोर्ट्स हैं, आउटपुट पोर्ट्स हैं, देन पावर पोर्ट्स आते हैं। सो वो जो पूरा रहता है ADC DAC, ये सारी चीजें वो हार्डवेयर सेक्शन के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है OS। सो OS कब यूज होता है, OS एम्बेडेड सिस्टम के अंदर दो केस होते हैं, एक जहाँ पे OS आप यूज कर सकते हैं, अदर होता है एक स्टैंड अलोन सिस्टम जहाँ पे आपको किसी भी तरह के OS की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा कि वो मल्टीपल टास्क अगर मुझे परफॉर्म करवाना है या मुझे एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है उसी के साथ में, सो समझिए मुझे 4 एप्लीकेशन या 4 टास्क है मेरे जो कंटिन्यूसली चलते रहने चाहिए, सो दैट इज डन बाय द ओएस। वो आपको एक यूआई भी प्रोवाइड करवाता है, एक यूएक्स भी प्रोवाइड करवाता है, और उसी के साथ में आपको मशीन के साथ में इंटरफेस करने के लिए जो कन्वर्टर या फिर जो ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, वो आपका ओएस बनता है। जबकि एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जैसे आप किसी कंट्रोलर को अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड एन ओएस फॉर दैट। आपका जस्ट जो सिंपल कोड है, वो कोड आप डायरेक्टली उसके अंदर इनपुट करते हैं एंड इट एग्जीक्यूट्स अकॉर्डिंगली। देन कम्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या काम होगा आपका, समझिए पावर पॉइंट है, गूगल क्रोम है, सो वो जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया है। सो अगर मैं बोलूँ कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इफ आई से यू केल, सो केल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कंट्रोलर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। केल कोई दूसरा फीचर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। व्हाट इट डज इज जस्ट यू कैन राइट अ कोड इन योर लैंग्वेज, इट ट्रांसलेट्स इट इनटू द मशीन लैंग्वेज, और फिर वो आपका जो भी कंट्रोलर या एडिशनल डिवाइस है उसको वो प्रोग्राम कर सकता है। ये एक डिटेल्ड लुक है हाउ अ एम्बेडेड सिस्टम लुक्स। सो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक प्रोसेसर यूनिट दिख रहा है। सो प्रोसेसर यूनिट रहता है, या फिर आई कैन से इट इज अ कंट्रोलर यूनिट फॉर अस। सो ये जो रहता है ये कोर यूनिट है, इट इज द सीपीयू ऑफ इट। सेकंड आ जाती है उसकी रैम। सो कंट्रोलर्स के अंदर अगर आज आप लैपटॉप या डिवाइस ऐसा कुछ मोबाइल वगैरह कुछ भी आप एप्लीकेशन ऐसी परचेज करते हैं, डिवाइस परचेज करते हैं, सो आप क्या देखते हैं उसके अंदर कि भाई मुझे स्टोरेज कितना मिल रहा है, मुझे रैम कितनी मिल रही है, क्या प्रोसेसर मिल रहा है। सो इफ आई एम गोइंग टू परचेज अ लैपटॉप, आई वुड से आई वांट 8 GB रैम, 500 GB ऑफ हार्ड डिस्क, और कुछ i7 सीरीज का मुझे प्रोसेसर चाहिए। इफ आई एम गोइंग फॉर अ मोबाइल डिवाइस, आई वुड से लाइक 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वुड बी गुड फॉर मी। सो कंट्रोलर्स के अंदर अगर ये सेगमेंट आप देखने जाते हो, सो यू गेट समवेयर अराउंड 4 KB, 8 KB, 12 KB ऑफ रैम, और स्टोरेज जो मिलता है वो आपको मिलता है 128 KB, 64 KB। सो इतना स्मॉल स्टोरेज रहता है, और उसका फिर भी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो काफी फास्ट होती है। द रीजन बीइंग कि उसको सिर्फ एक सिंगल टास्क परफॉर्म करना है जो उसको असाइन किया गया है कंटिन्यूसली। सो इसके अंदर आपको रैम मिल गया, आपका रोम आ गया, यू गेट अ वॉचडॉग ओवर हियर। उसी के साथ में आपको एक्सेलरेटर। सो एक्सेलरेटर के अंदर क्या रहता है कि आपको अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क उससे परफॉर्म करवाने जो उसकी कैपेसिटी के बाहर है, सपोज इफ यू वांट टू रन अ 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर इन अ लैपटॉप एंड यू आर नॉट हैविंग एनी एडिशनल ग्राफिक्स अटैच्ड टू इट, सो आप क्या करेंगे, एडिशनल ग्राफिक कार्ड आप यू वुड लुक फॉर दैट। सो आप समझिए एनवीडिया का या फिर एएमडी का कोई भी एक ग्राफिक कार्ड आप परचेस करते हैं, सो व्हाट इट डज इट इज अ ग्राफिक एक्सेलरेटर फॉर योर प्रोसेसिंग यूनिट। सो आपको जब 3D रेंडरिंग करवाना हो, सो वो एक्सेलरेटर दैट कम्स इनटू द रोल एंड प्रोवाइड्स यू अ बेटर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। देन आता है एफपीजीए, एचएमआई। सो इफ यू हैव बीन वर्किंग विद पीएलसी, दे हैव अ स्काडा। सो वो कॉन्फ़िगरेटर होते हैं सब उसके कि हाउ यू वुड परफॉर्म, हाउ यू इंटरफेस विद इट। सो आप किस तरह से आप मशीन के साथ में आप बात कर सकते हैं, मशीन को जो आपको बताना है वो किस तरह से आपको बता सकती है, तो वो सारी चीजें जो रहती है वो कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू आती है। और जो स्पेशलाइज लॉजिक हुए, जैसे यहाँ पे डीएसपी लिखा हुआ है, सो व्हाट इज अ डीएसपी, इट इज अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। सो जो भी तरह के अगर कुछ हैवी सिग्नल्स मुझे या फिर कंटिन्यूअस हाई लेवल ऑफ सिग्नल्स मुझे उसके अंदर प्रोसेस करवाना है, सो कंट्रोलर की एक लिमिट आ जाती है। उसके बाद में उसके ऊपर एक एडिशनल मुझे डीएसपी का कार्ड अटैच करना है। सो वो डीएसपी के कार्ड के थ्रू मुझे कोई भी, अगर समझिए मेरा कोई वीडियो है, सो वीडियो के अंदर मुझे कुछ प्रोसेस करवाना है, जैसे मोबाइल कैमरास के अंदर आपको ओआईएस मिलता है, सो और इमेज स्टेबलाइजेशन का एक फीचर रहता है। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ डीएसपी। आपको नाइट विजन कैमराज रहते हैं जो नॉर्मल कैमराज के अंदर भी आपको नाइट विजन प्रोवाइड करवाते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ डीएसपी। सो जो भी कैमरा के थ्रू जो डिजिटल सिग्नल्स आपको मिल रहा है, डीएसपी इज अ थिंग विच कैन प्रोसेस इट, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वो रिजल्ट्स वो आपको प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है हमारा एक सेक्शन आता है सेंसर्स और एक्चुएटर्स। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स के अंदर कंट्रोलर के साथ में अगर मुझे आज कुछ भी अटैच करना है, सपोज आपके मोबाइल के साथ में आपका टच स्क्रीन है, सो टच स्क्रीन इज टाइप ऑफ सेंसर।
इफ यू आर प्लेइंग गेम्स अपॉन इट, सो गायरोस्कोप यूज होता है, एक्सेलरोमीटर होता है, उसके अंदर प्रेशर सेंस करने के लिए बैरोमीटर होते हैं, फिर आपके नेविगेटर्स के अंदर उसमें मैग्नेटोमीटर आता है। सो ये सारे जो सेंसर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करवाना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। सो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं रहता है कि कोई भी रॉ सेंसर को आप डायरेक्टली कंट्रोलर के साथ में पेयर करवा सकते हैं, नहीं। जो भी आपके सेंसर्स हैं उनको आपको एडीसी या डीएससी के थ्रू साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। सो आपके कंट्रोलर के अंदर जब आप सेंसर्स को अटैच करते हैं, they get connected to the ADC or the DAC of the controller, and then the signal that has been processed by the ADC or DAC, and it comes with a transducer in it. So then the signals are provided to the controller for further processing or analysis. Then are the maintenance ports. So maintenance ports अब क्या काम करते हैं, ये थोड़ा एक किसी को भी अगर कोई भी देखता है तो किसी भी सिस्टम के अंदर मेंटेनेंस एक मस्ट है। कोई भी आप सिस्टम हो आपका, छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा, सो एवरीथिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। सो कंट्रोलर को किस तरह का मेंटेनेंस, बिकॉज इट इज नॉट अ मूविंग पार्ट, उसके अंदर कुछ मूविंग नहीं है, इट इज सिंगल सिलिकॉन चिप। सो अगर कुछ भी उसके अंदर एरर आती है, कोई भी फंक्शनिंग के अंदर अगर उसका बिहेवियर चेंज होता है, आइदर उसकी स्पीड स्लो हो गई है, मेमोरी फुल हो गया है, सो इस तरह का अगर कुछ भी उसके अंदर एरर जनरेट होता है, सो हाउ यू वुड बी नोइंग और हाउ यू बी नोइंग अबाउट इट। सो उसके साथ में क्या किया जाता है कि एक एलसीडी समझिए आप इंटरफेस कर रहे हैं उसके साथ। सो एलसीडी जैसे ही आप इंटरफेस करते हैं, सो यू गेट उसके आप इंस्ट्रक्शन सेट्स के थ्रू आप उसको बता सकते हैं कि मुझे क्या देखना है, मुझे अगर कुछ एरर आती है तो वो आप डायरेक्टली डिस्प्ले करवा सकते हैं। सपोज इफ यू आर ओपनिंग अ वेबसाइट और वो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सो व्हाट यू गेट एन एरर 404। सो इट इज अ टाइप ऑफ एरर। सो इसी तरह के एरर्स जो रहते हैं वो आपको कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी आते हैं। उसी के साथ में आपको वहां पे आप यूआर्ट भी कनेक्ट करवा सकते हैं या यूएसबी आप कनेक्ट करवा सकते हैं। सो यूआर्ट और यूएसबी क्या करेगा कि आपके एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर कोई डिस्प्ले आपने अटैच नहीं किया है, सो आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ एरर आई है, या फिर आपको अंदर से डीबगिंग का इन्फो निकालना हो, या उसने कुछ जो आउटपुट जो आया प्रोग्राम का, जो पिछले 1 साल से वो किसी कोड को वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसका अगर आउटपुट जो टाइम वेरिएशन के साथ में जो आउटपुट के अंदर वेरिएशन आ रहा है, सो वो अगर आपको मॉनिटर करना हो तो वो आप किस तरह से करेंगे। सो सिंपली आप जो अपना लैपटॉप या पीसी है वो आप यूआर्ट या यूएसबी के थ्रू आप एम्बेडेड सिस्टम के बोर्ड के साथ में अटैच कर सकते हैं, और सिंपली यू कैन फीड द डेटा इन इट, और फिर आपके जो स्टैंड अलोन डिवाइस है आपका, वहां से आप पूरे डेटा का एनालिसिस करके यू कैन चेक दैट व्हाट द एरर कुड बी। एक आता है बैटरी लाइफ टाइम मॉनिटर। सो बैटरी लाइफ टाइम मॉनिटर क्या काम करेगा, जो अगर आपका एम्बेडेड सिस्टम ऐसा है जो ओनली डीसी पावर के सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, सपोज किसी सोलर ट्रैकर का सिस्टम है, सो सोलर ट्रैकर का सिस्टम रहता है, सो वो कंटिन्यूअसली डीसी पावर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो उसको जो रहता है वो लाइफ उसकी मॉनिटर करनी रहती है कि अभी मेरे पास कितना बैटरी रिमेनिंग है। सो इफ यू कैन सी इन योर मोबाइल डिवाइस एज वेल, सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, अ मोबाइल डिवाइस। इसीलिए मैं बार बार उसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सो उसमें क्या है, आपको बैटरी का आपका मॉनिटरिंग मिलता है, हाउ मच इट इज चार्ज, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू चार्ज, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर द डिस्चार्ज। सो वो पूरा जो लाइफ साइकिल रहता है वो यू कैन इजीली मॉनिटर इट। Now, what are the specific features why embedded systems is used? So it can execute a pre-programmed functions. Embedded system is not a thing which is meant for performing multiple operations at the same time. If you want to process any continuous video, या फिर आपको सिर्फ एक सिंगल वीडियो है जिसको आपको कंटिन्यूअसली प्रोसेस करवाते रहना है, या फिर समझिए आपकी पंचिंग मशीन है, या जिसको आपको किसी भी मेटल की शीट के अंदर आपको पंचेस करवाते रहना है कंटिन्यूअसली। सो वो उसका एक ही फंक्शन है कि आपको जो एक्चुएटर या जो भी आपका मोटर या ड्राइव है उसको कंटिन्यूअसली उतना प्रेशर देके वो पॉइंट तक पहुंचाना है कि वो मेटल के अंदर पंच हो, मेटल का शीट आगे जाए, नेक्स्ट पंच हो, फिर से वो स्लाइड करे, नेक्स्ट पंच हो। सो ऐसे जो आपके जो सिंगल फंक्शंस रहते हैं, सो वो काम करवाने के लिए ही कंट्रोलर्स को यूज किया जाता है। सो उसका एक पर्टिकुलर सेट होता है जो आप कमांड्स उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनको वो एग्जीक्यूट करवाता है। अभी एम्बेडेड सिस्टम जो है इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, सो इट कम्स विद द हार्डवेयर चिप्स एज वेल। सो सिलिकॉन का जैसे मैंने बताया कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, सो इट इज जस्ट अ सिंगल सिलिकॉन चिप। सो यू नीड टू प्रोग्राम इट। सो वो प्रोग्रामेबल होता है। अगर आप कोई 2 साल या 3 साल इफ यू आर ऑपरेटिंग अ मशीन फॉर
almost 2 to 3 years, and now if you want to upgrade it or you want to change some features or add on some features in it, so you can easily program that same device without upgrading the hardware. And in the same opposite case, if I say about a processor, so if you want to make it more fast or if you want to increase the threads or the process in it, you need to upgrade the hardware as well. जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपको ये काम नहीं करना पड़ता है कि आपको हार्डवेयर भी आपका चेंज करना पड़ेगा. द हार्डवेयर इज एक्सेलरेटेबल. आप अगर कुछ सिंगल एडिशनल डिवाइस आप इफ यू वांट टू परफॉर्म अ हेवी टास्क अपॉन इट, सो यू जस्ट नीड टू अटैच अ सिंगल डिवाइस. सो वो डिवाइस आपका क्या काम करेगा कि इट वर्क्स एज एन एक्सेलरेटर, जो आपको जो भी आपके फीचर्स या जो आपकी प्रोसेस चल रही है, इट एक्सेलरेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इट. एंड embedded system, it performs, as I said, it performs a single set. So it is not like a computer which can perform multiple operations at the same time, or it can carry out wide number of operations. So it is a standalone device. You can use it for a single or two purposes at a time. It is not always independent device. So why it is not independent? So embedded systems, it is a part of a larger device. So if I say there is a motherboard of a laptop, so you attach a processor upon it, you have a graphical unit, so everything is an embedded unit in itself. If I say you have a RAM, so RAM comes up as an embedded unit. It is an electronic part, or I can say it is an electronic peripheral. So जो आप किसी भी एक सिस्टम के साथ में अटैच कर रहे हैं, which makes it more complex and more reliable. Then the program scripted for an embedded system is called a firmware. So as I said earlier, that you need a program which can perform your task on the embedded system. So आप उसको क्या कहो, it is a firmware, or it is a software sort of thing which is stored upon the read only or flash memory. So उसका जो flash memory रहता है, you can easily erase it, you can rewrite it, you can even overwrite it without erasing as well. And embedded system, it is not compulsory for it that it possesses some user interface. So it is not compulsory, it might have or it might not have. So user interface क्या काम करता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि it lets you talk with the machine. If I'm typing something, it is a device, there is a transducer in between which converts the language and provides it to the machine. So UI क्या काम करेगा, you can see through it what actually the process is going on. So it is not compulsory that it would be having a display or it would be having a LCD upon it. As I told earlier in the previous slide, that you can attach your own PC through a UART or USB. So these are the things. They can either be highly advanced graphical interface, like I can say in the PCs or mobiles. So they are very heavy graphic processing units, or it can have no user interface. Like if you have seen a board of Arduino, so it doesn't comes with any UI on it. It is just a single chip having a microcontroller upon it and all the other additional peripherals that are required and the port expansion, whatever is needed. So that is the thing, that it doesn't possesses any UI and it comes with a condition. And it mainly depends upon the purpose of the device. So if I'm saying you that I am having a DSP board, so what would DSP do? It would simply process a digital video or a digital image or any digital signal which is not in the capacity of the controller to process. So ऐसे सिग्नल्स जिनको खुद कंट्रोलर प्रोसेस नहीं कर सकता, उन प्रोसेस के लिए डीएसपी को यूज किया जाता है. सो डीएसपी का एक ही सिंगल प्रोसेस हुआ, वीडियो प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग. सो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा है. सेम वे इफ आई से फॉर एफपीजीए, सो एफपीजीए के अंदर भी इसी तरह के अगर आपको कुछ सिग्नल्स रहते हैं, फिर कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सो वो सिर्फ उन्हीं को प्रोसेस करवा पाता है. सेम अगर मैं एडीसी की बात करूं, so ADC can only transfer analog signals to a digital signal. In the vice versa, DAC, so DAC can do only digital to analog. So हर डिवाइस का एक पर्पस रहता है. एम्बेडेड सिस्टम इज पर्पस स्पेसिफिक. सो जो उसका पर्पस है वो उसी को सर्व करता है. इट इज डिजाइन फॉर कैरिंग आउट अ सिंगल पर्पस. And simple embedded systems. So if you are seeing something like a water level indicator, if you have seen, or a
a digital thermometer. So digital thermometer, it is a simple embedded system. It is having a temperature sensor on it and a controller unit and a display. So सिंपल उसके अंदर आपको एक बटन मिलता है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और आपको एक ऑन और ऑफ का स्विच मिलता है. सो इट इज अ सिंपल एम्बेडेड स्विच विच इज नॉट मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सिंपल टू यूज. एंड कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के अंदर क्या होता है कि यू गेट मोर ग्राफिकल इंटरफेस, यू कैन process much more processes at a single time, and the space is reduced for it. Agar if I'm saying that all the process of a laptop or a processor I need to carry upon a microcontroller, so just imagine कि एक लैपटॉप जो टाइम फ्रेम के अंदर if it is processing 1000 datas in 1 second, so how much large size of embedded system or a microcontroller you would need to process that data in the same time. So प्रोसेसर्स या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो रहते हैं, दे गेट यू अ हायर स्पीड एंड दे गेट यू फ्लेक्सिबिलिटी एट द सेम टाइम. यू कैन परफॉर्म मल्टीपल प्रोसेसेस. Now comes the classification of embedded system. So functionality, performance, requirement, there are multiple factors on which the embedded systems are classified into. So if you say a standalone embedded system, so if you have been to some shopping mall or like petrol pumps or gas stations, so wahan par if you swipe through a card, it is the machine which is there, it is a standalone embedded system. So it doesn't require any additional peripherals. You just swipe your card और जितना पूरा प्रोसेस करना है. सो बैंकिंग रिलेटेड इफ आई कैन से प्रोसेस, जो पेमेंट इंटरफेस आपका हुआ, रिसीवर के अंदर उसको पेमेंट को डिपॉजिट करना है, जो आपको पेमेंट दे रहा है उसके अकाउंट से आपको पेमेंट लेना है, सो वो जितना भी पूरा प्रोसेस है, सो वो एक सिंगल डिवाइस है जो आपको परफॉर्म करके दे रहा है. सो इट इज अ स्टैंड अलोन सिस्टम. फिर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, सो इट इज द वन ऑफ आई कैन से मोस्ट इंटरेस्टिंग सिस्टम. रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम क्या काम करता है कि if in case there is a delay of even 30 millisecond, 50 millisecond, it can lead to a catastrophic failure. What is a catastrophic failure? So it could be a loss of machine, it could be a loss of life as well. So real time embedded system के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है जो है डिफेंस सिस्टम. सो देयर इज अ रडार. आज अगर कोई भी नेवल शिप है, सो इट इज enabled with a radar upon it. अगर वहां पर कोई मिसाइल आ रही है, they are having a command and decision system. You can see here that there is a radar, there is an incoming missile, a weapon firing system, and a command and decision system. So real time system के अंदर even a delay of 10 milliseconds or 20 milliseconds can lead to a devastating failure. वो पूरा शिप को बर्बाद किया जा सकता है एक मिसाइल के थ्रू, अगर राइट टाइम पर वो सिस्टम डिसीजन ना ले. सो उस केस में क्या रहता है कि आपको इनकमिंग मिसाइल है, उसका आपको ट्रेजेक्ट्री आपको ट्रैक करना है, उसका क्या स्पीड है, वो कितने टाइम में कितने लोकेशंस को वो क्रॉस करेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आपका जो वेपन फायरिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना रहता है कि भाई जो दोनों के सिस्टम्स आप मैच करवाएंगे, दोनों की स्पीड मैच करवाएंगे, तभी जाके वो मिसाइल को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर दो पार्ट रहते हैं मेजरली. एक रहता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम, एक होता है हार्ड रियल टाइम. सो जो डिफेंस का अगर मैं बात करूं, सो इट इज अ हार्ड रियल टाइम because a delay of 10 to 30 millisecond can lead to a major accident or it can lead to a loss of life or loss of property as well. Soft real time embedded systems की अगर मैं बात करूं, so if you have seen a DVD player, so DVD player के अंदर अगर मैं बटन प्रेस करता हूं to take out my tray for placing the DVD, so if it is giving even a delay of 1 second also, I don't care about it because it doesn't provide me any sort of loss or I'm not losing something in that 1 second. Then comes the networked information appliance. So networked information appliance के अंदर क्या रहता है, interconnected networks. You might have heard about IoT. So IoT के अंदर आपके multiple devices, if you are not at the location, suppose security cameras है, so if you have installed your camera in India and it is connected through internet, you can watch your live stream or you can watch your videos in UK, US, any country. So that is network information appliance. Like weather systems जो डेवलप किए जाते हैं, जो आपको हर जगह के आपके टेम्परेचर, आपको विंड स्पीड, एयर प्रेशर,
ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो यू कैन चेक इट ऑन योर लैपटॉप, यू कैन चेक इट ऑन योर मोबाइल, you can check it in your smartwatch. So all these are interconnected to each other. So that is a network information appliance. Like पूरा एक mesh या फिर एक net create होता है interconnected devices का. Then comes a mobile device. So mobile device के अंदर आपके mobile phones हो गए, laptops हो गए, then music players हो गए, I can say calculators हो गए, फिर GPS trackers हुए. So those are mobile devices which you can carry anywhere and you can use it any way you want. Then one of the major part is programming of embedded system. So any embedded system doesn't work without programming it. So if you want to make it work, you need to program it according to the way you want it. So there are multiple languages available in it for programming the any embedded system. So the first language which was developed for programming any controller or a processing unit, it was the assembly language. Assembly language was little bit complex, but yes, it was the one who created the system, or I can say it created the foundation for that. And nowadays, even also that assembly language is used in many systems where you want to design some complex systems, you need assembly level programming in it. Then there are many more languages after that have been developed. Like if I say, there has been C, there has been C++, there has been object-oriented C, that Java, J2M, then Python, then there are like multiple languages you can say. So every language is doing the same task. Like if I say that if I want to blink an LED upon an Arduino board, for 1 second. So I can write that code in Kale. I can write that code in assembly language. I can write that code in C. That code can be written in C++. That code can be written in Java or Python also. But what is the task? Just to switch on the LED for 1 second, keep it off for 1 second, again switch it on. So there are multiple languages. They are having different syntax. They are having different orders to write the code and execute it. एंड आज की डेट के अंदर भी जो भी मेजॉरिटी एम्बेडेड सिस्टम्स जो रहते हैं, सो उनको अगर प्रोग्राम करना रहता है या उनके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, मेजरली आज भी वो सी लैंग्वेज में किया जाता है. द रीजन बीइंग असेंबली के बाद में सी वाज द लैंग्वेज, और आई कैन से सी इज द फाउंडेशन. सो सी लैंग्वेज के ऊपर ही जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जो पाइथन है, सो पाइथन का जो बेस है पूरा, दैट इज क्रिएटेड ऑन सी प्लस प्लस. इफ आई से J2ME, सो उसका भी जो बेस है वो पूरा C++ के ऊपर क्रिएट हुआ है. और not only C, even C++ is also increasing. The like if I in Arduino or if in ARM processors, so C++ is also expanding the way it should be, and it is providing the programmer an object-oriented methodology. What does object-oriented methodology means? So you can have multiple approach for performing a single task. So if you want to measure a temperature from any machine or any unit, so you have 3 to 4 different ways how you can do it. So that flexibility is provided by C++. Now comes the communication interface. So this is the thing through which any wireless machine or device which can communicate with any embedded system. So these are the different types. You can see there is a serial communication interface, SCI. So it is having a RS-232, 422, 485. So you have seen that serial port in the old monitors or CPUs. There were 8 to 9 multiple pins, and that needs to be inserted into a jack. So that was the type of RS-232 or 422 type of communication. Then comes the serial SCI. So serial SCI is I2C, JTAG, SPI, then synchronous serial communication, and ESSI. So what is the difference between a serial communication and synchronous serial communication? So serial communication, it transfers one bit at a time, and it needs to be connected in a cross manner. Like if you are having two different controllers and if you want to make them communicate, or if you say you are having a one controller and one communication device, so
a controller and a Bluetooth device, I can say. So Bluetooth device, RX pin, and the controller's transmitter pin that needs to be connected with each other. So whatever data the Bluetooth would be receiving, it would be transmitted from somewhere. So controller's transmission port would be transmitting that data to the Bluetooth receiver port, and whatever data the Bluetooth has received for processing it further, so that needs to be transferred to the controller. So the transmitter port of Bluetooth would be communicating with the receiver port of the controller. So that is the cross communication. So that is the serial communication interface. But when in synchronous serial, so there is a series of data that has been sent continuously. So you don't need to wait for a single bit to be transferred, then the next bit would be transferred. So in synchronous, you can send mostly 9,600 bits at a time. So it generates a packets of 8 bits of data, and it transfers it continuously with a higher speed. Then comes a USB. So we are all aware about USB, that how a USB functions. Then comes a network. So Ethernet, CAN protocol, Loanworks, Li-Fi. So these are the protocols where you can interconnect multiple devices which are connected through a wireless network for longer distances. So if I'm having a cloud server and if I want to upload some data upon it, so I need to connect my controller or my machine to the network or to the internet. So from that, like there could be an Ethernet port, there could be an onboard Wi-Fi module, there could be a CAN network protocol. So from these network protocols, I can connect my device to the internet, and the data can be stored upon some cloud. Next is the timers. So in timers, there is a PLL, there is a capture or compare, and time processing unit. So what PLL is? PLL is a phase lock loop. What it does, if you are providing it multiple inputs and it is generating multiple outputs, so how you would be knowing that the output which I need is for the system A or the system B or the signal C? So PLL does the function for you. Whenever you are providing an input signal, it stores it, it compares to the output and says you that yes, the signal A and the output B are same. So the output B is corresponding to the signal A, and for the signal B, the output D is corresponding to it. So PLL functions that way. Then comes a time processing unit where you can process your time. Like if there is a RTC, real time clock upon or a watchdog timer. So what they do, they process the timers or they process the timing of the controller unit. Then is the discrete IO or the GPIO. So on GPIO or general purpose input output, what you can do is you can connect your sensors, you can connect your actuators, you can connect your drivers. So whatever additional peripherals you want to connect, you can connect it to the GPIO. Then comes the ADC or DAC. So as I explained earlier, that ADC and DAC, that they convert analog to digital and digital to analog. So in this image, you can see that there is a serial communication. So RX is receiving some data, TX is transmitting some data. And whereas in parallel communication, there is single data bus which is transmitting the data to all the ports at a time. And the controller input output, where you can read or write the commands, you can control the clock, you can initialize or you can reinitialize the system accordingly. Next is the selection of the embedded system. So how embedded system is selected? So there has been, you can first, you need to select the domain where you want to apply it. So it is having a multiple combination. You can apply your embedded system to an automotive industry, you can use it for industrial automation, you can use in medical, you can use in defense, consumer electronics, mobile devices, and many more applications. So if suppose you are going for automotive industry, then the domain has been identified that you want to develop your embedded system for an automotive application. Then after, the next is to identify the application in the sense of functionality. What functions you require, how much complexity you want, what could be the performance, how you would do the cost analysis thing. You want a higher end system, it would be more costly. If you want a low end system, it would be less costly.
then the area where it would be applied, the environment where it would be placed. So the whatever unit you are developing for automotive section, so it would be placed near the engine, it would be placed in the cabin, or it would be placed in the backside of the car. So you need to take care of all these parameters. Then how much power would be required to it? Would it be uh, outsourcing the power requirements of the already existing systems? So it shouldn't overburden the system. Like if I'm having a 10 ampere supply, so it should not be a system that which consumes more than 10 ampere of supply in total. So if you are having peripherals attached of 9 ampere in your car, and you attach a device which is 2 ampere, so it should not be it is not feasible for that. You need to design the system according to the power needs also. So there has been always a comparison between the efficiency and the power dissipation. So I will show you how these things function. So this is the classification how microcontrollers are classified into different manners. So there are different bits. It is 4-bit, 8-bit, 16, 32. There are memory or devices, like if you want an embedded memory or onboard memory, or you want to attach an external memory, like if you are using a Raspberry Pi, you get an onboard RAM. But if you want like you want a storage space upon it, so you need to additionally attach a USB or micro SD card upon it. So it is an external memory device. Then based upon the instruction set, like if you are going for a RISC set or CISC set, then it is a memory architecture. So memory architecture is divided into two parts. It is a Princeton and Harvard. And fifth comes the family of it. So there are multiple manufacturers. It is like the 8051, the base is 8051 for different companies. So Motorola is also into development of microcontrollers. PIC is there is Texas Instrument, there is National Instruments, that is ARM, there is Samsung. So there are many companies who are into manufacturing of it. And for, if I say for 8051, there is Intel who is working on the same foundation. There is Atmel Electronics that is working, that is Dallas Semiconductors, then Philips Electronics, then Siemens. So these all companies are working upon the base of 8051. So we can say that for the controller foundation, 8051 is the base of it. Then comes the selection procedure. So you got this sheet, okay, that how many types of controllers or on what parameters they are differentiated. So next thing comes how you would select it. So the best available controller in the embedded system world is the ARM processor. So if you want best performance in a smaller or compact system, you must go for ARM. But when we see for a power consumption, a single chip of ARM without a motherboard consumes a power of around 400 milliwatts. That is okay. If we see from 1 watt, so it is just 400 milliwatts. And next is the 8 mega 1031. So it consumes around 16.5 megawatts. So you see how a significant drop is there from 400 milliwatt to 16 milliwatts. But on the same side, ARM is providing you a higher processing power, but 8 mega is providing you a lower processing power. So the performance according to the power decreases. And the best comes the Texas Instruments MSP 430. So there it is having a wide range of operation as compared to the 8 mega 1031. It can more process at the same time, and it consumes 1.2 milliwatt. So there is drop of almost 10 to 12 times in the power requirement, and the performance is also better than the 8 mega 1031. So you can't force someone that you have to use this only. So whenever an embedded system is designed, it is left upon the designer that according to the requirement, whatever suitable you think, you have to use that. So from this, you will get an exact idea that how an embedded system functions. So you can see here that the first block is a sensor block. So in the sensor, there could be multiple things attached. It could be a temperature sensor, it could be a humidity sensor, it could be a pressure sensor. Then the data from the sensor is provided to the transducer. So what the transducer does, the sensor data, it converts it into electronic signals. We don't know what
language or in what form the sensor has collected the data. It could be in form of signals, it could be in form of digits, or it could be any frequencies. So transducer does the task easy for the controller unit, that it converts those signals into electrical signals which can be identified by the controller. Then that data is provided to the ADC. Now this is the electronic signals, or like if there is a temperature sensor, so there would be some variation upon it. So it won't be like 0 degree, 10 degree, again 10 degree for 10 seconds, then again 0 degree. It would be ranging from 0 to 5, 8, 9.2, then 10. So it is a type of analog signal. So that analog signal is converted to the digital signal by help of ADC. Then that ADC provides the signal to the processor. So the processor processes the signal and generates the desired output. So that output again it is needed to be converted into the analog form to be understood by the humans. So the process signal, it is also a digital signal. Then it is converted into again an analog signal, and on the output you can display it somewhere on a LED display, or you can show it on a LED, like if the temperature is exceeding above 40 degree, the LED should be on. But I don't care about how much higher it would be more than 40. It could be 50, it could be 80 also. Just I need to blink the LED on. And you can connect it to LCD display where you can continuously monitor the rise or the fall of the temperature. So now this is how the program flows. So we can select a temperature sensor. There is a varied range of it, that AD590, LM35, 335, LM75. So LM series is having a good range of thermocouple or like temperature sensors. There is K type, J type, then thermocouples are there, then thermistors are there, NTC thermistors are there. So they are having a wide range of sensors. Then I said this is all the process how it is done. So the analog input is converted into digital by the transducer, by the ADC. Then the ADC provides the signal to the our processing unit. Then the processing unit is programmed by using multiple languages. As I told earlier, that you can use a KL, you can use RIDE, you can use ARM. So multiple C compilers can be used to program your requirement. So once the program is debugged and found error free, it is dumped into the flash memory of the microcontroller using ISP. So ISP, it is into most of the controllers are performing upon ISP, but in Philips it uses a flash magic name program for converting the codes into the machine language. And now when you have programmed your device, you have attached all the input output devices accordingly. So your microcontroller chip now acts as an embedded chip, where you can say that you have developed a thermometer like this. That's all. And open for questions. So if you have any questions, please. Students, if you have any questions, you can write down your questions and queries in the comment section. So I guess nobody has any question. I guess they have understood each and everything that you have explained. No, that's great. Okay. So on the behalf of Paru University, I express my gratitude to Mr. Ravi Sharma for taking out his valuable time from his busy schedule and giving us adequate knowledge about the embedded system. We really thank you for that. And and with this, we end our session over here. Have a great day. And thank you very much, sir, for sharing your valuable knowledge with us. Thank you very much, ma'am, for providing me this opportunity so that I can share what I know to the students who could be beneficial in some or the other way. So that's what our motto we are working upon. We the thing is just we want to spread knowledge to as many people as we can. It doesn't matter what way we do it.
You are absolutely correct, sir. And today, in today's world, the practical knowledge is very much important as Yeah, compared so to the theoretical yes, knowledge. that is the thing, that when you leave your university or your college, you are not having that much industrial knowledge that you need through the curriculum or the courses which we are studying. So these are the things which bridge the gap between the college education and the industrial requirements. So There, it is not the thing like you can read from the books and directly go to the industry and work over there. So you need this sort of practical knowledge to work upon, yes. and I'm happy to share that knowledge to your students. Thank you Thank you for that very opportunity. and thank you very much, sir, for sharing your valuable knowledge with us. With this, we are signing out for today's webinar. I hope you all have enjoyed it. Thank you very much. Bye. Have a great day and stay safe. Sir, shall I leave?